Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic today we'll discuss the conventional and non-conventional sources of energy. Conventional and non-conventional sources of energy. In last topic, I discussed about the renewable and non-renewable sources of energy, and today we will discuss about the conventional and non-conventional sources of energy. So far as conventional source is concerned, we'll write the traditional conventional. So far as conventional is concerned, से आप याद रखेंगे the traditional sources of energy, the traditional sources of energy which are familiar to most people are called as conventional sources of एनर्जी. ठीक है, तो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर फेमिलियर टू मोस्ट पीपल, जो सब लोगों को पता है क्या होता है, मतलब जो आम आदमी के जहन में है एनर्जी का कॉन्सेप्ट, उन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जो मेन कन्वेंशनल सोर्सेज है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लिखेंगे द मेन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर क्या क्या है. एक तो है वुड एंड फॉसल फ्यूल्स. अब फॉसल फ्यूल्स में कौन कौन आएगा? कोल है, पेट्रोलियम है, एंड नेचुरल गैस. These sources जो है they are included in this what you call as conventional sources of energy. Is it clear? Now another type is there what you call as non-conventional sources of energy. Non-conventional में आप याद रखेंगे ये है the sources of energy which are the sources of energy which are not based on the burning of fossil fuels, which are not based on the burning of fossil fuels or the splitting of atoms of nuclear fuels are called as non-conventional sources of energy. They are also called as इनको हम कहते हैं alternative sources of energy. They are also called as alternative sources of energy. ठीक है, तो वो sources of energy which are not based on जो based नहीं होते हैं किस पे, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स पे नहीं डिपेंडेंट होते, और ना ही जैसे हम इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिशन, उनमें क्या होते हैं एटम्स और न्यूक्लियर स्प्लिट होते हैं या ज्वाइन होते हैं. तभी मैंने लिखा विच आर नॉट बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ ईदर फॉसिल फ्यूल्स और स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स. ठीक है, आर कॉल्ड एज नॉन कन्वेंशनल. इनका दूसरा नाम जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एग्जाम्पल है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी है हमारे पास, सोलर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, एनर्जी. तो दीज आर द वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल में मैंने बताया आपको दे आर द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर फेमिलियर टू मोस्ट ऑफ द पीपल एंड आर कॉल्ड एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. मेन कन्वेंशनल कौन कौन सा है? वुड है और फॉसिल फ्यूल्स है. फॉसिल फ्यूल्स को कहाँ से? वी डग देम आउट ऑफ अर्थ, जैसे कोल है हमारे पास, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है. ठीक है, इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है
ये वो sources of energy होते हैं which are not based on the burning of fossil fuels or the splitting of atoms or the splitting of the atoms of nuclear fuels, thus are called as non-conventional sources. इनका दूसरा नाम है, they are also called as alternative sources of energy. जैसे हमारे पास है इलेक्ट्रिक हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हमारे पास we have solar energy, biomass energy is there, geothermal energy is there. I hope this is clear. So tomorrow in the next lecture we will discuss them in one by one. Okay, thank you guys.